So hello students, in the previous video we were studying that how a soldiers reached a village because he was returning to his home, and he was returning after over the war, and in the way he chose a place, means the small village. The name of the village is Bohemia, and how the villagers were reacting over them. And then finally the Master came, and what was his reactions, and also the reactions of the villagers we studied. Now in the next video you see the soldiers had all too clearly, if only because the Master was now bellowing at the top of his voice, and the little crowd that had gathered around him was echoing his words with every sign of approval. Not a bean will I give him, a woman with a wart on her nose was saying. Not a single pea pod. We were respectable folk here, said another. Soon the whole square was murmuring disagreeably, and the soldier might well have been forgiven if he had felt a little despondent. Now, see what was the reaction. The soldiers he was listening patiently, the Master as well as the villagers, and with a woman with a wart. What you know? What means anything which is increased of on our body which is not नीड. जैसे किसी चीज़ का बॉडी के ऊपर अननेसेसरी ग्रोथ हो जाना, जैसे किसी की नाक बहुत लंबी हो जाए, किसी के कान बहुत चौड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, ये क्या होता है? वार्ट. तो इसी तरह से एक जो जो बुर्ज मास्टर था वो, और जो विलेजर्स थे, वहाँ के जो लोग थे, सबकी बातों को जो सोल्जर्स था उसने आराम से सुना, बिना किसी रिएक्शन के. वो लोग बोलते गए और उसने चुपचाप सुना. A woman with her wart on her nose was saying, not a single pea pod. Means a woman, she was not ready to give anything like also a single pea pod. यानी एक जो जैसे कि होता है ना कि कुछ हम देंगे उसको, लेकिन वहाँ जो औरत थी जिसके कुछ बॉडी पर यानी मुंह के साइड पर कुछ रहा होगा जो कि अननेसेसरी ग्रोथ हो गया था, जैसे आप इल्ला ले लीजिए, तो उस तरह से कुछ ग्रोथ हुआ था. उसने कहा कि मैं सिंगल जो पी पॉड है, पी यू नो, पी आप जानते हैं, जैसे कि पी मीन्स क्या होता है? मटर. तो उसने कहा कि मटर के बराबर भी मैं कुछ नहीं दूंगी, उतना भी मैं नहीं दूंगी. एंड अनदर सून द होल स्क्वायर वॉज मरमर. और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि मैं इन लोग कि हम लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे. एंड सोल्जर्स माइट वेल हैव बीन फॉरगिवन. और सोल्जर्स को माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि वो वहाँ रुक गया था बिना पूछे, तो उसको माफ़ किया जा सकता है. इफ़ ही हैड फेल्ट अ लिटिल डिस्पोंडेंट, अगर वह अपनी बातों को स्वीकार कर ले कि मुझसे गलती हो गई, या फिर मुझे यहाँ नहीं रुकना था, या फिर अपनी साउंड को वो डाउन कर लें, यानी जो भी वो कह रहा है चुपचाप धीरे से कहें, तो इस बात को सुन करके हम लोग उसको माफ़ कर सकते हैं. In fact, he was not disheartened
at all, for he was extremely cheerful. In fact, he was not disheartened at all. But then, after the soldiers, he did not dishearten. मीन्स जो इसके बाद भी जो सोल्जर्स हैं वो अपने इरादों को वो इधर उधर नहीं किया. उसने सोचा कि मैं यहाँ रुक गया हूँ तो अब यहीं रहूँगा. पर ही वॉज एक्सट्रीमली चेयरफुल. और जितने भी रिएक्शंस थे विलेजर्स के, बुश मास्टर के, उनके बाद भी वो क्या रहा? खुश रहा. Swept all his red cap, made a mock bow to the assembly, winked at the woman with the wart on her nose, and said, "All right, friends, all right, Mr. Bushmaster. So don't worry. I would not ask a thing of you. I shall just spend the night here, if I may, minding my own business, and in the morning I shall be on my way." So then the soldiers politely he spoke that, okay, I accept that. I'm not going to ask you to give me something, only I have to stay here for one night, and in the morning I shall go from here with my bag and baggage. यानी उसने कहा कि मैं यहाँ केवल रात गुजारूंगा और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगूंगा और मॉर्निंग जैसे ही होगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा. आई नो हाउ यू ऑल फील. मैं जानता हूँ कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं. एंड आई डोंट ब्लेम यू फॉर इट. वी ओल्ड सोल्जर्स वी कैन बी नोसेंस समटाइम्स. No, don't you worry. I shall just clean up my cauldron. And he rubbed the inside of the pot in a desultory sort of way with a spotted handkerchief. Just prepare the crockery and make myself a nice bowl of stone soup. And then the soldiers, he told that, okay, I know how you are feeling. You are not feeling well because I have stayed here. So I'm sorry, but I'm not going to blame you because we are old soldiers. उसने कहा कि ओके ठीक है, मैं आप लोग से ये कहता हूँ कि मैं आप लोग से कुछ नहीं मांगूंगा और मैं यहाँ केवल रात गुजारूंगा. और मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग कितने परेशान हैं, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, हम बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड सोल्जर्स हैं और मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. हो सकता है कुछ समय के लिए या कभी कभी जो ओल्ड सोल्जर्स हैं आपके ऊपर बोझ बन जाते हैं. तो डोंट वरी, इसके लिए आप लोग परेशान ना हो. केवल मैं अपना जो कॉल्ड्रन है, कॉल्ड्रन मैंने आपको बताया था, एन आयरन पॉट जस्ट लाइक अ बाउल. तो वो बाउल की तरह है. उसने अपना आयरन पॉट निकाला और ही सेड दैट आई एम गोइंग टू क्लीन दिस कॉल्ड्रन. और उसने अपने कॉल्ड्रन को अच्छे से साफ किया हैंडकरचीफ से. And so saying, he pulled out of his pack 2 large stones. और उसको साफ करने के बाद उसने क्या किया कि अपने बैग से उसने 2 लार्ज स्टोन निकाले. पॉपिंग देम इनटू द कॉल्ड्रन. उनको उस कॉल्ड्रन में रख दिया. ही फिल्ड अप विथ वाटर फ्रॉम द विलेज पंप. और वहाँ जो विलेज पंप था वहाँ से वो पानी लाया और उस कॉल्ड्रन में भर दिया. lit a fire of stick and settled down upon the ground to wait for the brew to boil. The villagers looked on stupefied. Stone soup? Was the man mad? Just stones in water. What kind of stones? Was he magician?
Who has ever heard of such a dish? Stone soup, ran the murmur around the square. And then what happened? When he popping the stone into the cauldron then and filled it with water, and then he fired the sticks, and then he settled down on the ground to wait when the soup will ready, and then he will enjoy. Then after seeing this activity, the villagers as well as the Burj master, all they were discussing that is he a magician? What kind of soup he will prepare? So everything was discussing by the villagers as well as Burj master. So I hope the narration of this paragraph you have understood. If you face problem, please ask.